Hi guys, welcome back to my channel. So today I thought of filming a very basic video, that is what all wearable shades I have, and these are shades that I actually wear daily, and they also don't show off much. They don't look like you're wearing a lipstick and you can see it that you're wearing a lipstick. So it's kind of a basic lipstick, and by basic I mean very basic, because when I actually wear it you can't really make out that you're wearing a lipstick. And all of them, I really mean all of them, look exactly the same. The one that I'm wearing right now is actually this one. This is from Nykaa and it is Spice Baby. This is actually Spice Baby 21, and this is how it looks. It looks very basic. I can't stress on the word basic because it's very basic. Yes, that you can see, it's very nudey but brownish nude. It although has some very buttery feel to it. I feel it just glides on your lips and looks very nice. And if you're not into nudes and basics, I think you can wear this underneath your main lipstick that you're actually wearing, because it gives kind of like moisture to your lips and it looks really nice. Also, I wear it just like that, and I really like it, to be honest, because I like such shades. The other one that I really like, and it's my recent favorite, is this PAC Retro Matte Gloss, and this is in the shade 40 Adore, and I adore this one. This is very nice. This is again very similar, brownie nude. I think I have every lipstick of this shade. My mom is fed up with me. This one actually, this one. So you can see how similar both of these are. So yeah, but I really like this. Is actually a liquid lipstick kind of a thing, and I also wear this just like that. But if you are again, you can just top it up, or yeah, basically you understand the point. So I don't know how to explain lipsticks, because I have just nudes. I go to a store and just say, bhaiya mujhe nude lipsticks dikha do, and that is what I have, and I really like, and I wear all of these just like that. For my skin tone, they don't look pale on me, but they do on some people. Like my mom looks pale on this one. Then the other one that I have is actually Maybelline's color Jolt matte, and it's an intense lip paint actually, and the color Rust Love. And I actually got mom, but she didn't like it, but she likes it, but I think I like it even more. So what I do is I just put it on and just smudge it up, तो ये थोड़ा वैसा ही हो जाता है, rusty. So I have just, you can see, I have put and just smudge it on like this, and ये फिर दोबारा इसी शेड में आ गया. So I just love everything of सच कलर. सो ये एकदम पेल लगते हैं, ऐसा लगता नहीं आपने कुछ अपने लिप्स से हटकर लगाया, ऐसे ये दे गिव यू अ टिंट सॉर्ट ऑफ अ थिंग, एंड आई रियली लाइक दैट. Okay, so the other thing, the other lipstick is this one. This is actually from Diana Super Matte Lipstick, and I got this जब मेरे कॉलेज का फेयरवेल हो रहा था, और तब तक मेरे पास कोई लिपस्टिक नहीं. मैं स्पेशली अपनी मॉम को लेके गई थी कि मुझे एक लिपस्टिक लेनी है, एटलीस्ट कॉलेज पास आउट होने तक बस एक लिपस्टिक तो मेरी होनी चाहिए. तो या दिस वॉज एक्चुअली द फर्स्ट लिपस्टिक दैट आई बॉट, एंड उस टाइम पे मैंने थोड़ी ज़्यादा महंगी ले ली थी. आई फील ये भी थोड़ी रस्टी ही है. ये भी बहुत मॉइस्चराइजिंग है, बहुत ग्लॉसी, इनमें से कुछ भी नहीं है. ये फिर भी थोड़ी ग्लॉसी है, बट इतनी भी नहीं है एक्चुअली. मैं से हर चीज़ में कुछ भी ऐसे नहीं लगाती. ये लिपस्टिक भी व्हाट आई डू इज़ आई पुट इट ऑन माई अपर लिप, एंड उस पर पूरा उसे स्मच कर देती हूँ, एंड वैसे ही उसको लोअर लिप पे लगा लेती हूँ. सो दिस इज़ द वन, दिस वन. So this is not actually nude. This is actually gives you like a pinkish nude kind of feel, and कभी कभी जो मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि अब मैं बोर हो चुकी हूँ न्यूड, ब्राउनिश न्यूड से, तो मैं थोड़ा पिंकी न्यूड लगा लेती हूँ. सो दैट इज़ दैट. देन द अदर वन दैट आई हैव इज़ एक्चुअली ये प्योर कलर न्यू लुक की लिप लाइनर है. दिस इज़ ऑल पिंक इन कलर, बट ये वही पिंकिश न्यूड में आ जाता है मेरे लिए. तो ये थोड़ा एक्चुअली लिप लाइनर्स जैसा है, थोड़ा इसको घसीटना पड़ता है, ऐसा नहीं, बट थोड़ा अगर आपने मॉइस्चराइज़ किया हो तो दिस लुक्स रियली नाइस. सो मैं क्या करती हूँ, पहले मैं ये वाली लिपस्टिक लगाती हूँ, दिस वन, थोड़ी पिंकिश में, एज यू कैन सी. ये लगाने के बाद मैं इसको
निक्स की एक आती है, मैं लाई नहीं, मेरी ड्रॉज में है वो, बट वो एक निक्स की न्यूड आती है, मैं नीचे मेंशन कर दूँगी, वो जो लिप टिंट्स होते हैं वो इसके ऊपर लगा देती हूँ तो ये एकदम न्यूड बन जाता है। एंड वही थोड़ा पिंकिश न्यूड, थोड़ा ब्राउनिश न्यूड मिक्स हो गई, एक अलग सी शेड बन जाती है, एंड दैट इज़ व्हाट आई रियली लाइक। सो या दैट्स दैट। देन द अदर वन दैट आई हैव, ये एक्चुअली बहुत बेसिक है, ये मैंने 7 हेवेंस की लिपस्टिक ली थी, पता नहीं कब। आज जब मैं अपनी लिपस्टिक्स निकाल रही थी मुझे तब ये दिखी, एंड आई जस्ट रियलाइज व्हाई आई हैवंट टू वोन इट, बिकॉज जब ये मैं लेकर आई थी तो मैं इतना ज़्यादा लगाती थी, बट ज़्यादा से भी मेरा मतलब है भी पूरी पड़ी हुई है। तो आई डोंट रियली वेयर लिपस्टिक्स, बट वेन एवर आई डू आई मेक श्योर यू कैन सी दैम। सो दैट इज़ माई बेसिक एजेंडा ऑफ वेयरिंग लिपस्टिक्स। सो दिस इज़ ऑल्सो पिंकिश न्यूड, इसको भी मैं कुछ भी मैं आपको एक्चुअली स्मच करके ही दिखा रही हूँ जिससे मैं पहनती हूँ। सो दिस इज दिस वन, so you can see this is kind of nudie pink, and this is in the shade nude beige, and ये एक्चुअली बहुत सस्ती होती है। 7 हेवन की लिपस्टिक्स आई गेस कुछ 150-200 की आ जाती हैं, एंड आई थिंक फॉर 150 and 200 दिस इज़ अ वेरी नाइस परचेज। ये बहुत अच्छी है और ये लॉन्ग लास्टिंग भी, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग। आई थिंक this one from Pack is a long lasting one. Other than that, because all of them are like mostly moisturizing and like gliding on your lips, so ज़्यादा तो कुछ नहीं चलता है except that Pack and this one Maybelline Jolt matte. I think इन दोनों के अलावा सब बहुत जल्दी उतर जाता है, बहुत पेल, क्योंकि ये सब एकदम ही मॉइस्चराइजिंग है, तो एकदम ही आप कुछ पीते हो खाते हो, लिपस्टिक इज़ गॉन इन देयर। So the other one that I have is actually from H&M. Although H&M यहाँ पे launch नहीं हुआ है beauty, so this is not from India, but I'll show you because I love this, and whenever you get an opportunity I think you should get it. This is a lip liner and in chocolate therapy, and dude this shit is boom.com. So ये actually थोड़ा browny है और थोड़ा ये browny nude देता है, but I really like it. So this is I put, and that is how I smudge it. तो smudge करने के बाद this looks something like this. So ये भी थोड़ा अच्छे से smudge नहीं हुआ, but you can basically make out that is how it looks. And I think ये भी बहुत ज़्यादा natural, और बहुत natural तो नहीं खैर, क्योंकि ये थोड़ा ब्राउनिश टिंट देता है लिप्स पे, एटलीस्ट मेरी लिप्स पे ही देता है। ये ऐसा नहीं लगता कि आपने कुछ नहीं लगा रखा, बिकॉज इसके साथ आई थिंक यू कैन मेक आउट कि आपने कुछ तो लगा रखा है। सो दैट इज़ दैट। नाउ द अदर थिंग्स दैट आई हैव आर बेसिकली माई टॉप दैट आई यूज विद माई न्यूड लिपस्टिक्स। सो I'll just quickly show you one. Actually I've already shown you. This is Lancome oil. This I use with this one क्योंकि बहुत ज़्यादा पेल हो जाता है लिप्स पे, न्यू लुक का लिप लाइनर, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेल हो जाता है और एकदम ही बहुत, दिस इज़ नॉट वेरी ईजी टू ग्लाइड ऑन योर लिप, थोड़ा ज़्यादा मेहनत कराते तो एकदम लिप्स ऐसे लगते हैं ओ माई गॉड दैट चैप नाउ। तो उसके ऊपर मैं लिप ऑयल लगा लेती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है। सो दिस एक्ट एज अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर मी। ये भी और इसके अलावा सारी ऑलमोस्ट लिपस्टिक्स के ऊपर जो मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा चैप हो रही है मेरे लिप्स उनको लगाने के बाद, तो आई वेयर दिस ऑयल अबव दोज लिपस्टिक्स। एंड ये थोड़ा आजकल जैसे ग्लॉसी लुक भी चल रहा है लिप्स पे, सो आई थिंक दिस ऑल्सो लुक्स गुड ऑन दैट। देन द अदर toppers that I have are this one. This is actually this can also be used as like a highlighter, बहुत ज़्यादा छोटा सा ग्लिटरी भरी हुई, बट दिस इज एक्चुअली लिपस्टिक। ये भी H&M की है एंड मस्टर्ड न्यूड, और ये 5 छोटी लिपस्टिक्स का एक्चुअली एक पैक था। यू कैन सी हाउ क्यूट दिस लुक्स। सो दिस वाज अ पैक ऑफ 5 लिपस्टिक्स, एंड मैंने ऐसी ही ले ली थी, इंडिया में से नहीं, बाहर से ही। एंड आई थिंक मैंने ऐसी ली थी, उसको मैंने इसे लगाई नहीं, बट आई थिंक दिस इज़ अमेजिंग। इसको आप हाईलाइट, मेरे को ये नहीं लग रहा, मेरे को ये लग रहा मैं इसे हाईलाइटर की तरह तक क्यों नहीं यूज़ किया। सो दिस इज़ दिस वन, यू कैन सी। सो ये दिस वन, so it can also act as a highlighter, but it's in a shape of a lipstick, so you can use it as a lipstick as well. And I don't know, इसको खाली तो आप यूज़ नहीं कर सकते, but to top it up I think it's a great idea. And the last one that I have is actually New Look का lip gloss. This is actually lip gloss, and I think lipstick के ऊपर lip gloss लगाना आजकल एक नया fashion है, so
This is the one. और ये इतनी ज़्यादा moisturizing है that I have no word for it. ऐसा, although it gives color, but actually it does not. It's a very moisturizing lip gloss, and I think it really looks nice if you have like a nudish or pinkish lipstick जो कि बिल्कुल नहीं दिखती, तो उसके ऊपर I think this will look really nice. So yeah, that's what all the nudie lipsticks I have, and I really wanted to keep it short and simple, not elaborate explanations of it. I think I'll mention all the links of all the lipsticks that I own in the bottom bar. You can check it out for yourself. These are the ones that I really like it, so I really wanted to put it out there. This might or might not look good on everybody. And yeah, that was all with my video. So I hope you have liked it, and if you did, then please like, share and subscribe to my channel.